नमस्कार ऑल ऑफ यू। तो आज क्वेश्चंस ओडिशा जुडिशियल सर्विस आंसर राइटिंग बैच ओडिशा जुडिशियल सर्विस में भी और ओएसजेएस में भी। सो इंडियन एविडेंस एक्ट रो हम स्टार्ट करिछु। जो माने नुआ अछंती जस्ट मु डिटेल्स आउथरे कहि दउ जे बैच रो। तो ये बैच टा बेसिकली ओनली हमें आंसर राइटिंग पेपर वाइज चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज हमें कवर करूछु। ओके, तो सेथरे हमर कोन रहउची ना आपनकर ओजेएस और ओएसजेएस रो जिते सब आपनकर पेपर्स अच्छी सब गुड़ा एथरे कवर होची। ऑनलाइन मोड रे एटा रहउची। एवरीडे हमें 6टा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सेक्शन वाइज डिस्कस करूछु। गोटे दिन आगुरु तार मॉडल आंसर आपनको ऐप रे मिल जाउची। तो आपण रेडी हेकी रहबे। आ जो टाइम टा आपण दिया हबो से टाइम रे भी जदी आपण बहुत जन कहले कि हमें से टाइम रे अवेलेबल हो, आपण जो टाइम रे अवेलेबल रहउचंती सेही आपनको लाइव आंसर टा लिखिबार अछि। ओके, तापरे ताकू जो फॉर्मेट रे कुआइची पठेबार अछि इवैल्यूएशन पे। ओके, आउ जेतु चैप्टर वाइज कवरेज होची पेपर वाइज कवरेज होची ताले आपनकर एंटायर सिलेबस रो एमती क्वेश्चन रहिबनी किछि जोडा कि हमें कवर करूनो ता बाहरु आपनको क्वेश्चन पडुची परीक्षा रे। ओके, आउ प्राय जो क्वेश्चंस रो हमें प्रैक्टिस करूछु सेगुडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुडा ऑल बोर्ड्स रो सेथि पई हमें ता रेफरेंस भी दे दोछु कि एटा को बोर्ड रो क्वेश्चंस पडिछु। ओके, इंग्लिश टा हमर संडे दिन रहउची। आउ 6 डेज ए वीक आपनकर क्लास रहउची। खाली वेडनेसडे टा छुट्टी रहउची। ओके, टाइम आपनको जोडा आपनको ये टाइम टा को जाउची कोन रेकमेंडेड टाइम टा सेटा 7 to 9 आपण कर परिबे। बट आपण से टाइम रे चैम्बर अछि कोन अछि आपण जो भी टाइम रे आसीबे। ओके, रिकॉर्डेड वीडियो थिबो, रिकॉर्डेड वीडियो लगै कि भी आपण ओके एग्जाम दे परिबे। बट कथाटा हला सेटा कहा पई रहउची जो माने सेल्फ डिसिप्लिन टिके तांको टिके डिफिकल्ट होची इनिशियली। त माने कोन लाइव वीडियो रे या होची कि हमें आपण क्वेश्चन टा दोछु कहउछु यदि 15 मिनिट रे आपण लेखंतु 15 मिनिट हेई गले हमें स्टॉप कर दउ। ओके, ए जिंसटा आपण निजे भी कर परिबे थ्रू स्टॉप वॉच। आपण सेल्फ डिसिप्लिन हो पड़ियो जेहेतु मॉडल आंसर आपण पाखरे अछि आपण जानिचंती बहुत आपण लिखि परिबे 20 मिनिट पे 25 मिनिट पे किंतु हमहु जेतिके टाइम दियाइची ता भितरे सारिवार अछि आंसर। तो प्रथम 2 सप्ताह पई हमें से रेस्ट्रिक्शन टा रखुनु काहेकि ना बहुत पिला अछंती जो माने एका संगे 6टा आंसर केबे लिखिना। राइट, तेणु सेमानक पई फर्स्ट 2 वीक्स जस्ट खाली आंसर प्रैक्टिस ही हो। जो टाइम रे आपण लिखिया कथा लिखि परिबे। 2 वीक्स पर आपने टाइमिंग हिसाब रे 15 मार्क क्वेश्चन रे 15 मिनिट दिया हो, 5 मार्क क्वेश्चन रे 5 मिनिट दिया हो, 3 मार्क क्वेश्चन रे 3 मिनिट दिया हो। ओके, सो सही पैटर्न रे हमें ताको देखिबा। राइट, तो एटा 1 ईयर रो वैलिडिटी आरो रहउची आ आपनकर 5000 कोर्स फीटा रहउची। ओके, सो एटा तार स्ट्रक्चर टा रहउची। एथरक हमरो एवरीडे लॉ पेपर गोटे मेजर पेपर रहउची जोटा हमें एबे एविडेंस एक्ट रो स्टार्ट करिछु कि बीएसए आपण कहि परिबे। तो आउ खाली फ्राइडे दिन गोटे दिन आपन माइनर पेपर्स रहउची ओएसजेएस रो जोटा कि हमें एनडीपीएस एक्ट रो स्टार्ट करूछु। ओके, फ्राइडे दिन आउ सैटरडे रहउची इंग्लिश। तेनो लॉ पेपर्स आपन 4 डेज रहउची मेजर लॉ पेपर कॉमन फॉर ओजेएस एंड ओएसजेएस। फ्राइडे दिन गोटे दिन आपन ओएसजेएस में रहउची आउ सैटरडे कॉमन पेपर इंग्लिश टा रहउची। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर। एटा कंप्लीटली ऑनलाइन बैच किंतु जो माने ऑफलाइन बैच में इंटरेस्टेड अछंती तो हम ऑफलाइन बैचेस कटक भुवनेश्वर शहीद नगर और भुवनेश्वर खंडगिरी रे रहउची। ओके, आउ जदि आपण जॉइन करिया पे चाहउछंती कि आउ किछि डाउट्स अछि देन यू कैन कॉल और व्हाट्सएप दिस नंबर 7684054656। एई कोर्स टा हमर इंटीग्रेटेड बैच कोर्स संगे ऑलरेडी सेटा अछि। आपण को एक्स्ट्रा नवा पई पडिबन जो माने इंटीग्रेटेड बैच रे जॉइन करछन। ओजेएस 1 ईयर इंटीग्रेटेड बैच हो कि टिल सक्सेस इंटीग्रेटेड बैच हो आउ ओएसजेएस रो भी 1 ईयर इंटीग्रेटेड बैच हो कि टिल सक्सेस इंटीग्रेटेड बैच हो, इट इज इंक्लूडेड इन योर इंटीग्रेटेड बैचेस। ओके, सो लेट अस कम टू टुडेस क्वेश्चन। काली हमें देखते सेक्शन 1 to 4, आज सेक्शन 5 6। ओके, especially section 6। okay, that important, even 5 is also important. So first question ta apan rahla, what is distinction between relevancy and admissibility of fact illustrate. Okay, eta Haryana Judicial Service 1996 ra question. Then question 2 bit A, all admissible evidence is relevant but all relevant evidence is not necessarily admissible. Comment, eta kali bi gote question ame dekhichu. Tara bit B dechi, point out whether in the following cases the facts sought to be proved are relevant.
A is charged with shooting at B with intent to kill him. In order to prove A's intent, the prosecution wants to prove the fact that A has earlier shot one C. Tapare, tara second bit, excuse me. A is tried for writing and is proved to have marched at the head of the mob as the head of the mob. Okay. The prosecution wants to prove that mob was shouting. Okay. So Uttar Pradesh Judicial Service 1992 out 2003 रे और हरियाणा जुडिशियल सर्विस 1999 एटा एक्चुअली डायरेक्टली आपण इलस्ट्रेशन रो आछि ओके तो आपण भाबते सेम क्वेश्चन माने केमति रिपीट कर दोचंती प्रॉब्लम क्वेश्चन तो एटा कतडा हला कोन ये निजो मनरु केबे क्वेश्चन के दियंती जो भी आपण बोर्ड देखंतु जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आसे इधर डायरेक्टली इलस्ट्रेशन रो आसे जोटा डायरेक्टर दिया होची और केतेटा इलस्ट्रेशंस को मिसई की से माने गोटे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना जमती दिल्ली जुडिशियल सर्विस है तेणु जो आप पढ़ुंट इलस्ट्रेशन टा भलरे पढ़े आ इलस्ट्रेशन टा क्लीयर रहिबे कहीं ना प्रॉब्लम क्वेश्चंस रो इलस्ट्रेशन रु ही आसीबे ओके एटा गला क्वेश्चन 1 एंड 2 तबर क्वेश्चन 3 की आसंदो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेलेवेंसी एडमिसिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2008 रो क्वेश्चन तापर एटा पंजाब जुडिशियल सर्विस रो क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन टा किंतु क्वेश्चन टा डिफिकल्ट नो आपण क्वेश्चन रो लेंथ देखि डर जानतोनी बहुत गुडे जुडिशियल सर्विस अछि जंती मध्य प्रदेश हे गला टू सम एक्सटेंट दिल्ली भी हे गला ता क्वेश्चन लेंथ रो बहुत बड़ा बड़ा किंतु तार जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज सिंपल लेट अस गो फॉर दिस अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन देयर वाज एन एनिमिटी बिटवीन N and his nephew S on the account of a dispute in respect of agricultural land and the agricultural produce therefrom. On the date of occurrence, S fired a pistol shot at N. N raised the alarm, on account of which PW1 and 2 reached the spot, and at the point of time, N fell down and S made good his escape. PW1 and 2 brought N to police station, whereupon statement of N was recorded, and treating the same as an FIR, police started investigation and sent up S for trial. During the trial, PW1 and 2 stated as to what they had heard from the injured at the relevant time, and according to PW2, the injured had told him that S had fired upon him. The trial court convicted S under section 307 and the High Court dismissed his appeal. Before the Supreme Court, the appellant accused contended that the evidence of PW2 was not admissible under section 6 of Evidence Act, in as much as the injured told the witness and the factum of alleged shooting by accused at the injured could not be said to have formed part of the same transaction according to him. By the time he reached the scene of occurrence, several people had gathered there. Answer with reference to sections of Indian Evidence Act. तो एटा तो हमें करदबा तापरे जो पार्टटा आसे जोटा कि टिके you have to know that एई सिचुएशन रे कोन कोन डिसाइडेड केसेस अछि and case law if any. Okay, so सेटा हला question 4. Now come to question 5. Discuss the relevancy of fact under the provisions of Indian Evidence Act for the following. The fact testified to by D that soon after the alleged murder by A, C had peeped through the window and exclaimed, "Look, A is aiming his gun towards B." Okay, so our relevancy kon hoba Indian Evidence Act under it. Question 6. State with help of relevant case laws the conditions under which a hearsay evidence may be admissible as res gesta, and also critically examine the doctrine of res gesta. So these are the questions. Okay, already model answers are आपनकर जो ऐप अछि तारा देखियो ओटे डेली टेस्ट फोल्डर रे क्वेश्चन अलगा दिया अछि आपन फोल्डर रे मॉडल आंसर अलगा दिया अछि तो सेठी आपन जदि आपन निजे जानचंती सेटा बेस्ट जदि आपन सेटू रेफर करी कि तापरे केना डायग्राम केमति करिवो सेठी हिंट्स उडा दे दिछि तो सेटा करिया पे चाहउचंती देन यू कैन रेफर इट एंड यू कैन बी रेडी. ओके, तापरे आपन ताको लाइव आंसर राइटिंग टा करिवो. ओके, सो all the best for your preparation for judicial service. Namaskar.